Hey, good morning and welcome back once again to Easy English Explanation by Pooja Joshi. So, how are you all? You must stay at home and be safe always. And don't forget to wash your hands off and on. Please do wash your hands off and on and use sanitizers if you don't have the soap and water readily available with you. So today we are going to start with the Standard 10th NCERT book First Flight 7th chapter Glimpses of India. First part A Baker from Goa. Second sub part of the first part, this baker from Goa. This is the second video I am going to start today. I am going to make this. So for the first video you can refer to my YouTube posted first video from the YouTube, and then I will also tell you as regular. I would read out the lesson for you. Word meanings will be there, as well as full detailed explanation of word to word with nice images and word meanings in English and Hindi. So be ready for that. Are you ready? So let's start. I would like to tell you something that the people of Goa, they were habituated to eating bread from the time of Portuguese rule. जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहा था तब गोवा में पोर्चुगीज़ का रूल था और गोवा के लोगों को पहले से ब्रेड खाने की मॉर्निंग में जैसे एक तरीके का स्टेपल फूड हो गया, उनका नाश्ता हो गया, उनको बहुत ही आदत है. तो अब ये एल्डर्स याद करें. द एल्डर्स आर रिमेंबरिंग दैट द पोर्चुगीज हैव गॉन, दे आर नॉट देयर, बट द मेकर्स ऑफ द लोव्स विद देयर मिक्सर्स एंड मोल्डर्स एंड who keep them in furnaces, they all are there. And the children, they like the sound made by the thud and jingling sound made by the traditional bakers who come to sell their products in like streets day to day. Daily they are coming with their products in the streets, and for children they are specially bringing some sweet breads, special kind of breads, or the bread bangles. So children were very excited to have that bread bangles. They loved that, and in the morning as soon as they came, they just rushed outside to see what has the baker brought today. कि आज बेकर हमारे लिए क्या रहा है. बच्चे जैसे इनकी आवाज़ से उठते थे तुरंत ही घर की बाहर दौड़ते थे. Let's see the second video which I am going to start right now. The baker made his musical entry on the scene with a chung chung sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. Kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. Let's see if there are any. Jung 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 is a sound made by the tinkling sound or mixed with the third sound of the baker. Banged means just striked hardly, like pushed hardly the bamboo on the ground for making a noise. Mild, very soft. Rebuke means a scolding. Dart, approval of. See here, expression of disapproval. Then mild, rebuke, expression of disapproval or scolding. Mild means soft. Very light. Loaves of bread, I have already told you. Parapet, like portion outside the house or the terrace, some small portion is there. Edges of the balcony or the terrace, there is some edge. This is called the parapet.
Loaves you know already. Okay, let's see the paragraph meaning. They made their musical entry. Musical entry is the entry is welcomed, like it is with music of the bamboo and the bells, but it is a loud entry, so it is called musical entry for the children. And one hand they supported the basket which they were carrying on the head, and the other hand they pushed the bamboo to the ground for making the noise, for announcing their arrival. They would greet the lady with some namaste, English namaste, like good morning, and they placed their vertical bamboo, and on the top of it they placed their baskets and supported the baskets. The loaves would be delivered to the servant. The loaves would be given to the servant, purchased by the servants of the house. They just wished the lady of the house, the main lady of the house, with good morning, and they gave to the servant. But the children still would not give up. Okay, the kids, they would be pushed aside, because to buy the bread properly, the kids had to be pushed aside by some expression of disapproval, means the rebuke, थोड़ा डांट वाट लगा के, और वो फिर भी नहीं पीछा छोड़ते थे the children. Then also they won't let go easily, and then they climbed a bench or some higher portion or some parapet, the extended portion of some balcony or like that, then peep into the basket to see that what if anything is there special today, if is there anything special today. And the author can still recall the typical fragrance of the loaves, means can still have that nice sweet scent, nice sweet smell of the loaves, the freshly baked bread and loaves. And they didn't even care to brush their teeth. They came out as soon as they got up, or they were awake in the morning, and they did not want to take the trouble of taking out the mango leaf, the datun, for the brush. But they don't feel that it is not necessary to brush at all. They felt that hot tea will have wash and clean everything in mouth, and they felt that the tigers never brush their teeth. So यहाँ पे क्या है कि बेकर की जब भी संगीत में एकदम म्यूज़िकल एंट्री होती थी, ये एंट्री म्यूज़िकल इसलिए क्योंकि ये चिल्ड्रन के द्वारा बहुत ही लाउड है, इनका इंतज़ार करते थे रोज़ चिल्ड्रन। और एक हाथ से बेकर्स लकड़ी का जो बैम्बू का जो स्टिक है वो उसको ग्राउंड पे रखते थे, और दूसरे हाथ से उन्होंने बास्केट को सपोर्ट किया हुआ था, और जो बास्केट था जिसमें वो चीज़ें लाते थे उसको वो केयरफुली वर्टिकल बैम्बू पे, सीधे खड़े बैम्बू पे वो रख देते थे, और घर की लेडी को वो लोग नमस्ते जैसे गुड मॉर्निंग कहते थे, और चिल्ड्रन को वो लोग दूर हटाते थे थोड़ा, पर चिल्ड्रन इतनी इजीली पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थे। और घर के सर्वेंट को लोव्स डिलीवर किए जाते थे, यानी कि उनके ब्रेड घर के सर्वेंट्स ख़रीद लेते थे, और बच्चे ज़रा कोई भी ऊंची जगह पे, कोई भी बेंच या पैरापेट पे, थोड़ी एक्सटेंडेड बालकनी पे, कोई भी ऊंची जगह पे चढ़ के वो बास्केट में झांकना शुरू कर देते थे। पीप मतलब झांकना शुरू कर देते थे। और राइटर को किसी भी तरह से आज भी याद है कि एकदम टिपिकल बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी जो ताज़ी बेक्ड ब्रेड और चीज़ों की होती थी, तो उसकी खुशबू में बहुत अच्छे लगते। बड़ों के लिए लोव्स ब्रेड के और छोटों के लिए बैंगल्स लिए जाते थे, जो कि मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ पिक्चर में। और बच्चों को ये फील होता था कि ब्रश करना कोई ज़रूरी नहीं है, और कौन इतनी तकलीफ़ लेगा कि मैंगो ट्री का दातुन तोड़ के लाए और उससे ब्रश करे, और वो ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि जो टाइगर होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो कभी ब्रश नहीं करते हैं, तो बच्चे भी अपने आप को बाघ की तरह मानते थे। और जब वैसे भी गरम चाय सब कुछ मुंह में से सब साफ़ कर देने वाली है, सब धो देने वाली है अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आगे। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely
एसेंशियल। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया कि ये गोवा में इतना ज़रूरी क्यों है बेकर का काम। हर तरीके की ब्रेड्स बनती थी शादी में, और एक स्वीट ब्रेड थी जिसे बोल कहा जाता था, BOL। और मैरिज की गिफ्ट्स भी मीनिंगलेस थी जब तक कि पार्टी में कोई ब्रेड की आइटम्स अच्छी अच्छी ना हो। जैसे कि कोई साउथ इंडियन शादी में चावल की अलग अलग तरीके के आइटम्स ना हो, तो वैसे ही वहाँ पे ब्रेड की आइटम्स ना हो, स्पेशली स्वीट ब्रेड बोल ना हो, तो मीनिंगलेस था, पार्टी का कोई चार्म ही नहीं रह जाता था। सो हियर इट इज़ टोल्ड दैट मैरिज गिफ्ट्स वर ऑल्सो मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड known as bowl. They were useless, means nobody would feel that marriage is good till they had some different items made of sweet breads, different varieties of breads. And baker's role, and baker was very very important in the village. baker का काम और baker बहुत ही important, विलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। और केक्स तो आपको जानते हैं, और बॉलिन हाउस का भी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़रूरी थे क्रिसमस पे, जो कि क्रिश्चियंस का सबसे एक ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, एकमात्र कह सकते हैं आप, सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो। और यहाँ पे मैं आपको बॉलिन हाउस का पिक्चर दिखा देती हूँ, इसलिए कहा गया कि बेकर की फर्नेस की प्रेजेंस जो विलेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी था, एकदम एसेंशियल है। इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये लेट्स हैव अ लुक एट द बॉलिन हाउस। ये देखिए बॉलिन हाउस है, जैसे सूजी और नारियल, सेमोलिना और कोकोनट से बने हुई इलायची के बिस्किट्स, केक्स टाइप। ये बॉलिन हाउस है, सूजी और नारियल वगैरह से बने हुए, इलायची डाल के, जैसे नान खटाई या कोई कुकीज़ होते हैं, गोवन बॉलिन हाउस। यस, यू कैन सी। ओके, लेट्स सी अहेड। सो यहाँ पे क्या आ गया कि गोवा के बेकर्स किस तरह से बहुत ज़रूरी और एसेंशियल्स थे, क्योंकि हर तरीके ओकेशन में, जैसे घर में किसी की बेटी की सगाई हो, इफ़ देयर इज़ डॉटर्स एंगेजमेंट, दैट लेडी ऑफ द हाउस, दैट गर्ल्स मदर हैड टू प्रिपेयर द sandwiches were very very urgent and for essential, and for making the sandwiches we need bread. Let's see the next paragraph. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a patter. So, यहाँ पे ये कबाई, व्हाट इज़ कबाई? कबाई इज़ अ स्पेशल पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मीन्स थोड़ा अजीब, वियर्ड, स्ट्रेंज ड्रेस वोन बाय द बेकर्स ऑफ गोवा। मतलब एक अलग तरीके की ड्रेस पहनते थे, जो कि एक ही सिंगल पीस में, एक लॉन्ग फ्रॉक जैसा होता है जो घुटनों तक, नीज तक पहुंचता है। दे वर वेयरिंग अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक विच वर एक्सटेंडिंग अप टू द नीज। और राइटर ने अपने चाइल्डहुड में देखा था कि बेकर्स एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउजर्स पैंट पहनते थे जो कि 3/4 था, जैसे कि आजकल की कैपरी, विच इज़ मोर देन द नी एंड लेस देन द full length like foot. So it was longer than the half pants and shorter than the trousers. Even today anyone who wears like this, he is called a पैडर। उसको ये कमेंट मिलता है कि वो पैडर की तरह दिख रहा है, उसने पैडर की तरह ड्रेस किया हुआ। अभी भी जिसने 3/4 कैपरी की तरह पहना हो तो उससे कहते हैं कि ये एक पैडर की तरह ड्रेस्ड अप है। पैडर मीन्स गोवा के बेकर्स। चलिए मैं आपको एक आध पिक्चर भी दिखा देती हूँ उसका, देखिए। पैडर ऑफ गोवा, इसका तो नी तक लग रहा है, पर थोड़ा सा नी से ज़्यादा हो और पाँव से कम हो तो उसे कहते हैं वह एक पैडर की तरह ड्रेस्ड है।
Let's see the last paragraph of the second subpart of first part. A baker from Goa, glimpses of India, seventh lesson. The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person like a jackfruit, like physical appearance, is easily compared to a baker. Let's see any word meanings. Profitable, which is getting us profits, securing profits, giving profits. Then starved, dying of hunger. Starving means will die of hunger. Okay, then plump physique. Plump means motu, fat, and physique. Physique means the figure, the structure. Then jackfruit is a fruit which is very plump, like round. Then testimony. Testimony is the demo, like open testimony, public statement about a character or quality. Means easily we can see the demo. Publicly we can see the demo. It is open. Example. Now let's see the meaning in English as well as Hindi. The baker, they usually collected bills at the end of the month. They didn't collect the money directly, and monthly accounts were recorded there only on some wall in pencil. So much trust the bakers had in the families, in the houses. Then here also now we give the monthly bill of the press, that press man, that iron man, that person who irons our clothes, as well as our doodh wala, that is the milkman and all. So we give monthly accounts, we pay the bill monthly. So there also they pay the bill monthly of the baker for taking and purchasing his bread and bread eatables. So they used to record roughly on some wall, and that too with a pencil. But baking was very profitable in these old days. The baker's family never died of hunger, means they were having the 24/7 12 months business. They never felt that they will not get the food or their business will not be okay. He and his family and servants always looked happy, and they were prosperous, and they looked very golu molu, and they looked too fat. Their physique only told that they are very happy and well to do, and they are getting enough to eat. Even today, somebody is there who is looking like a jackfruit and he is having very fat or he is obese, then he can be easily compared to a Goan baker. सो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में ये कहा गया कि बिल्स जनरली ब्रेड के बिल्स मंथली कलेक्ट होते थे और उनका रिकॉर्ड सिर्फ एक वॉल पे, किसी भी रैंडम वॉल पे पेंसिल के द्वारा लिखा जाता था और उसी से हिसाब होता था महीने का, और महीने महीने में वो लोग आके पैसे ले जाते थे अपनी ब्रेड के। पर तब भी वो लोग बहुत खुश रहते थे और बेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल, काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था कि जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होती थी। और ना सिर्फ बेकर पर उनकी फैमिली और उनके नौकर वो भी बहुत खुश रहते थे और बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत वेल्दी दिखते थे। उनकी फ़िज़ीक से ही पता चल जाता, क्योंकि वो लोग काफ़ी मोटे ताज़े होते थे। उनकी फ़िज़ीक से पता चल जाता था कि ये लोग कभी भी भूख से नहीं मर सकते और ये लोग, उन्हें खाने को बहुत अच्छी तरह से मिलता है। आज भी कोई मोटा सा आदमी होता है जैकफ्रूट की तरह, तो उसे लोग बेकर से कंपेयर करते हैं, उसका तुलना बेकर से करते हैं। सो आई होप this lesson is easily understood to you. This was the first part. Second subpart, A Baker from Goa by Lucio Rodriguez from 7th chapter, Glimpses of India. So how do you like this lesson? Did you understand it? Please do give your comments. They are very, very valuable for me.
So, till then, time being, I'll take your leave. Goodbye. See you.